Hello, hello, hello. Oh, hi, 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 hello. Wait, I'm fixing, huh? Just a minute. How can I? Oh, yes, समझ गया. कमेंट्स इधर से कैसे ये लेना चाहिए ना, वो दिख रहा था. ओके. ओ. यस बॉस. हम्म. ओहो. हम्म. हाँ. हम्म. वाह 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 वाह. ओ यार बीजी स्क्रीन कनेक्ट करवी પડશે. ઠીક છે चल बाय. हाँ. अरे यार दूसरा स्क्रीन कनेक्ट करना पड़ेगा क्या शायद. What nonsense, why can't. चला गया भाई. चला गया भाई. इतना सा. हेलो हेलो. अब कैसा लग रहा है, क्लियर लग रहा है कि मैं स्ट्रीम ही नहीं हो रहा शायद. ओह नो मैन. हाय हाय, थैंक यू. क्या कोई कंफर्म कर सकता है, ये दिख रहा है? अरे नॉट इनफ एक्सीलेंट कंडीशन. यस क्लियर. ओके ओके. तो व्हाट्सअप व्हाट्सअप हाउस. कोई ट्रैप तो नहीं हुआ ना आज? वेरी वेरी फास्ट मूव एक ही कैंडल में. पूरा प्रॉफिट टू लॉस. वो शेयर करते हैं ना इसको ट्विटर पे. भाई क्या. गुड आफ्टरनून चिराग, प्लीज टेल मी योर स्किन केयर रूटीन. हाँ ओमकार है, मैं कुछ स्किन केयर का नहीं करता. मतलब मैं एक ही बार सुबह जब नहाता हूँ तभी मुंह धोता हूँ, बाकी नेचुरली रहने देता हूँ. और इतना कुछ अच्छा भी नहीं है. अभी रिसेंटली 15 दिन से वर्कआउट शुरू किया है, जिम जाना है. तो उसकी वजह से आई थिंक थोड़ा ग्लो आ रहा है. सब कुछ ठीक है. दिख भी रहा है, वॉइस भी ओके. ओके ओके.
यस भाई, आई गगन नायक आई पंच ऑल एट वंस, बास्केट ऑर्डर रहता है। मुझे किसी ने बताया कि जीरोधा नहीं दिखाना चाहिए लाइव स्ट्रीम पे, तो मैं दिखा नहीं सकता। ट्रेड रिकमेंडेशन कहलाएगा या कुछ ऐसा कुछ होता है। बट सेंसिबल पे लाइव पोजीशन देख ही रहे हो। बट यस, वो होता है, मार्केट ऑर्डर रख देता हूँ मैं, कॉल सेल का और पुट बाय का, जैसे आज रख दिया था। तो ऊपर होता है तभी रख लेता हूँ कि जैसे कि ऐसा फॉल आए तो मैं मार्केट ऑर्डर 10:45, मतलब ये कैंडल क्लोज हुआ मैंने देखा, इंस्टेंट पुट एग्जिट कॉल एंट्री। बेसिकली मैं पहले फ्यूचर्स में करता था, सो आई हैव दिस हैबिट। ये हैबिट पहले से है कि एग्जिट एंट्री फास्ट होना चाहिए। एक बाम तीन काम चंडू बाम, यप। इसको क्या हुआ? ओ हाँ, सब लॉग आउट होगा। बुलाओ यार सबको, कुछ आतंक मचाते हैं। हाँ पापा। हाँ हाँ, HDFC बैंक हाईएस्ट वेट है जी, बाकी रही गયું તું। हाँ 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 हाँ। ઓહો, 900 થી ક્રોસ થઈ ગયું, 900 એ હવે તો। ના ના ના, હા હા, ના ના, ઈ થઈ જશે, ઈ થઈ જશે, ઈ કાંઈ વાંધો નથી। હા હા, ઈ થઈ જશે, થઈ જશે। હું એકચ્યુઅલી મારું લાઈવ ચાલુ જ છે અત્યારે, હા થઈ જશે, ઈ થઈ જશે। અત્યારે છે, એક જ મિનિટ। હા, પ્લસમાં આવ્યું હવે, +8,000 9,000 10,000। હા, આમાં હવે કદાચ આ અકાઉન્ટ બંધ કરીએ હવે। હા। હમ। હા, સરસ હતું આ। ઓ ભાઈ સાहब, 100 पॉइंट, नाइस। जर्नी ऑफ रिटेलर, यस यस। मैंने, आई हैव शिफ्टेड, मैं कॉल पे था अभी, सॉरी। मैं आई हैव शिफ्टेड CE to PE ओवर हियर 24 125। शिट। ओके, नहीं नहीं, वो भी नहीं होगा, ये होगा। ये इसको इधर डालो। अरे यार, ये फिर से आ गया। हाँ, चलो ये भी चलेगा, कमेंट्स ही मेन है ना। ओ नो 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 कमेंट, ओ भाई। भाई खुल जा। हाँ, अभी समझ गया क्या करना है। ये भी रखते हैं। तो अपडेटेड नहीं लग रही। ओके, अपडेटेड, हाँ। यस, मैंने इधर से ही शिफ्ट कर लिया था, फ्रॉम CE to PE। जो ये लाइन थी वही मेरा वो था, 200 या कुछ वो रेफरेंस लेवल रखा था ये इसका। इधर से जो अप ट्रेंड शुरू हुआ उसका, तो बस इधर से शिफ्ट किया, इधर पे चल रहा है अभी। और अभी तो कुछ नहीं, मतलब वो कॉल्स का वो रिकवर हो रहा है मेरा तो। कॉल्स में लॉस हुआ वो अच्छा खासा था, 80 90 पॉइंट्स। आज ट्रेड का लॉजिक भैया, हाँ तो द सेम लॉजिक, मतलब गिरा, कॉल्स थे, इट फेल डाउन, बस इधर से होल्ड पे होल्ड। सर आप पहले जॉब करते थे या बिजनेस? मैं बिजनेस ही करता था, इम्पोर्ट्स का है हमारा। माय ब्रदर इज हैंडलिंग इट नाउ। ओके। व्हाट इज दिस नॉनसेंस मैन? ओ यस यस यस, याद आ गया, इधर से भी होता है।
आर यू डूइंग ओनली इंडियन मार्केट या और भी? ओनली निफ्टी 50 ऑप्शंस। उसके आई डोंट इन्वेस्ट, कुछ नहीं उसके अलावा। सूचक भाई जस्ट वन सजेशन, जब मार्केट में एक स्ट्रेटेजी आती है और सबको पता चलती है तो वो काम करना बंद कर देती है। जैसे कि 2 इयर्स पहले ऑप्शन सेलिंग खूब चलती थी। यस बट ऑप्शन सेलिंग देर आर फिक्स्ड रूल्स उसके। संदेश, देर आर फिक्स रूल्स कि भाई चलो 9:15 9:20 को आपने ये ले लिया, और उसकी वजह से सेम रूल्स सेम स्ट्रेटेजी, मतलब उसमें देर आर नो वेरिएशंस, फॉलो अप के वेरिएशंस होते हैं। 100 पॉइंट ऊपर गया तो कोई लोग उसका वो फॉलो अप करते हैं, कोई लोग होल्ड करते हैं। तो दैट इज ऑलमोस्ट वन एंड द सेम, तो वो तो ऑब्वियस है कि वो जाएगा, द प्रोसेस इज द सेम। बट इसमें इट इज ट्रेंड के नॉट स्टॉप ना, यू कैन नॉट स्टॉप मार्केट फ्रॉम ट्रेंडिंग। वो कंसोलिडेशन थोड़ी करेगा अगर सब ट्रेंड फॉलो कर लेंगे तो। देखते हैं, मतलब अगर ट्रेंड फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट। सबका एंट्री एग्जिट भी अलग होता है इसमें ट्रेंड फॉलोइंग में। लाइक वी नो अमोल द जीनियस, हाँ उसका एंट्री एग्जिट एकदम डिफरेंट है, पर फिर ही इज आल्सो ही इज स्टिल फॉलोइंग द ट्रेंड। पहले मैं, अब भी, सॉरी, बट आई विल हैव टू शेयर दिस। हाउ टू शेयर दिस? ये आई मैं फ़ोन में देख ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं लाइव हूँ। मतलब उसमें से मैं कमेंट्स पढ़ लेता या कुछ कुछ तो मिल जाओ। हम्म, समझ गया। आई एम नॉट नॉट नाउ। ओके, फाउंड इट। शेयर एक्स। वाह क्या सीन है। ओके, एक्स पे पोस्ट हो गया। सेंसिबल पे भी जस्ट लेट पीपल नो। फिर आता हूँ कमेंट्स पे। माई लाइव पीएनएल। मृणय, मृन्मय इज लाइव ना। एकदम फास्ट पहुंच जाते हो भाई। लाइव ऑन यूट्यूब। थैंक्स मृन्मय। हाँ, प्रीमियम में एक मुंह आ रहा है फिर शांत। अच्छा, मैं प्रीमियम्स तो आज देखा ही नहीं क्योंकि इधर तो नहीं दिखा सकते हैं ऐसा सुना है, बट लेट्स चेक। ये डिस्काउंट में चल रहा है फ्रॉम कैश। ओ वाह, पूरा लैग्ड। गया भाई, सब चिपक गया। ये गया तो गया। यस, मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, आई डोंट सेल। भाई आप होल्ड किस हिसाब से करते हो, मतलब डायरेक्शन तुरंत कैसे ऑब्जर्व करते हो? लास्ट डे के लेवल्स के पर बेसिस पर बताओ। हाँ तो यही लेवल था, जैसे कि कॉल्स। थोड़ा ज़्यादा रिवाइंड करते हैं चलो। भाई चल जाना चार्ट, हाँ। पुट्स थे इधर से, मार्केट ऊपर आया, कॉल्स ले लिए। ऊपर आ, ऊपर है, ऊपर टिक रहा है मंडे को। ट्यूसडे को नीचे आया, पुट्स ले लिए। नहीं चला, ऊपर आया, कॉल्स ले लिए। नहीं चला, ये आज नीचे आ गया, पुट्स ले लिए। आज हुआ कुछ 90 100 पॉइंट्स का लॉस होगा, कुछ 90 to 100 पॉइंट्स का ये कॉल्स में। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, ये था एसएल ट्राई, आइडिया ये था, बट थोड़ा इतना नीचे आएगा तो कैंडल क्लोज का तो मैं वेट कर लेता हूँ था। कभी ना कभी फेक हो जाता, इधर से ऊपर आ जाता तो करता ही नहीं। यस यज्ञेश भाई, जोश इज ऑलवेज हाई।
अभी तो मज़ा ही मज़ा है। आपके साथ जो आ गए आपकी पोजीशन के साथ, तो मज़ा ही मज़ा है ना। गगन नाई, प्लीज एक्सप्लेन डिस्काउंट सर, व्हाट इज डिस्काउंट विथ एग्जांपल। नहीं, मैं वो देख रहा था फ्यूचर्स का। हाँ, तो ये फ्यूचर्स है, तो वो कैश से कम में ट्रेड हो रहा है अभी। इफ यू कैन सी, अभी साथ में ही है और ज़्यादातर कम में ट्रेड्स हो रहे हैं उसके, तो मतलब डिस्काउंट तो ऑब्वियसली ये तो आज 3:30 को दोनों साथ में हो जाएंगे। अभी के लिए सिंस इट इज़ फॉलिंग, तो सेलिंग चल रहा होगा, अच्छा डिस्काउंट में चल रहा है वो। चेक करें, मैं ज़ीरोधा नहीं खोल सकता ना। उसका भी मार्केट डेप्थ चेक करते। लेट मी चेक इन माय फोन। सो देर आर बेसिकली 3 लाख ऑर्डर्स ऑन द फ्यूचर्स में, 3 लाख ऑर्डर्स ऑन द दिस साइड, अपना सेलिंग साइड। और 1 लाख ऑर्डर्स, ओपन ऑर्डर्स, बिड प्राइस वो है बाई साइड की। यस बेबी। तो सेलिंग तो हो रहा है, मतलब उसकी वजह से डिस्काउंट में रहेगा थोड़े टाइम शायद, जब तक ये ओपन ऑर्डर्स सारे मतलब हो ना जाए एग्जीक्यूट। वर्क इन यूट्यूब सीईओ सर, थंबनेल टाइटल शॉर्ट एडिट्स। नो ब्रो, नो नो, मैं वो तो कभी नहीं करूँगा भाई। वो तो टाइम वेस्ट है यार। क्यों करूँ ऐसे टाइम वेस्ट? में सब थोड़ी दिखावा, इधर कुछ चल रहा है। अच्छा चैनल, अच्छा चैनल। एक मिनट, हाँ, माई डॉटर इज कॉलिंग मी। यस बेबी। आर यू गोइंग टू डिस्टर्ब मी? इट्स हेवी। यू वांट पेपर? ओके। यू वांट दिस वन? द बिड लेट, बेट हाई। यस ऑफ कोर्स। तो हाँ, बिड लेट बेट हाई, वो अभी थोड़ा बेट और बाकी रह गया है। माई 33% क्वांटिटी स्टिल पेंडिंग। तो व्हाट आई वाज वंडरिंग इज कि ये गैप जो अभी फिल हुआ, व्हाट इज दिस, अच्छा हाँ, ये गैप जो अभी फिल हुआ, अगर ये सस्टेन नहीं अभी और नीचे, इफ इट माई क्वांटिटी थोड़ा नीचे का स्ट्राइक प्राइस भी आ जाएगा, विल रिस्क लेस इन इट। माइट नॉट fill the gap and fall down. Let's see. Which Amol are you talking? Compounding with Amol. You can check him on X. December future has not fallen much. Can we say the rally can continue from tomorrow? Is this fall is due to expiry? Yes, yes, totally. Looks like expiry because market depth में तो ऐसा दिख रहा है कि निफ्टी फ्यूचर्स का the bid and offer orders have a lot of difference, कि वो बहुत मार्केट में इंस्टेबिलिटी जो कहते हैं ना, कि बैलेंस नहीं है अभी। हाय चिराग, हाय हाय। दैट इज प्रिंटिंग समवन। नहीं नहीं भाई, मैं थोड़ी ट्रेड कर रहा हूँ, पड़ा है अभी तो। डिडंट आंसर, आई आस्क्ड यू क्वेश्चन ब्रो। भाई आई एम नॉट, मैं गया था बाजू में। कैन यू प्लीज अगेन आंसर? हिमांशु, यस आई सॉ, लव यू ब्रो। मैं ऊपर स्क्रॉल करने जाऊंगा ना कमेंट्स अगर, तो फिर नीचे का रह जाएगा लास्ट टाइम की तरह। मैं फिर ढूंढता ही रहता हूँ कमेंट्स यार। यस, दर्शन राठौड़। बिग फैन सर, आई एम ऑल्सो बिग फैन सर। चिराग भाई, वॉइस स्लो आवे छे, ओके। इफ आई इंक्रीज द माइक्स वॉल्यूम, वो डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस ज़्यादा आएगा, एंड करंटली देर इज़ अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। सो यही चलने दो यार। वेट, लेट मी चेक माई ओन वॉइस, थिंक आई कैन डू दैट। हाँ यार, थोड़ा लो तो आ रहा है, मैं अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ। टेस्टिंग टेस्टिंग। ओ भाई, लाइव ही नहीं हो।
टेस्टिंग टेस्टिंग। ओ भाई कितना लैग कर रहा है नहीं। टुमारो इज स्टॉक एक्सपायरी। यप। ओ भाई ऐसे कैसे स्ट्रीम हो रहा है, रुको कुछ करते हैं इसका। ऐसे थोड़ी चलेगा। हॉटस्पॉट। लेट्स सी। सर्च। यस आई थिंक गुड टू गो। या इट वाज नेटवर्क, लोकल नेटवर्क इशू, वो स्टेबल नहीं है मतलब अभी। दैट इज व्हाई आई थिंक आई डिड परचेज गेमिंग लैपटॉप बाय। नहीं वो गेमिंग कंसोल आई हैव वन, सो आई थिंक गेमिंग लैपटॉप नहीं, पर एक आई नीड अ न्यू लैपटॉप, यस दैट इज फॉर श्योर। बिकॉज ये थोड़ा 7 8 साल हो गए। मेरा भी स्ट्रगल चल रहा है बट नाउ गेटिंग बेटर। ओके, यू विल गेट बेटर ब्रो, ऑल द बेस्ट। Mayank, what is your SL in PE? SL in PE, let's check. I think यही तो, this same thing, yeah. Yeah, 24 200, yes, okay. This is the SL, अभी तो यही करेंगे। हम्म। अब तो कल ही देखेंगे SL, आज तो आई डोंट थिंक अब मूव आएगा बहुत अच्छा तो भी करेंगे वैसे तो। OBS की सेटिंग चेंज करने पड़ेगा आपको। इंक्रीज कर दूं थोड़ा और वॉल्यूम, चलो कर देता हूँ, डिस्टरबेंस भी उतना इंक्रीज हो रहा है यार इसी वजह से। हेलो। बहुत पेशेंस है ट्रेडिंग में, पर ये सब जब होता है ना तो फोड़ने का मन करता है स्क्रीन को। आई थिंक अमोल 5 मिनट चार्ट देखता है, क्योंकि 5 मिनट ब्रेकआउट पे उन्होंने एग्जिट किया था। पॉसिबल पॉसिबल। जो रूल्स उन्होंने बनाया है ना, सी ऑप्शन बाइंग में क्या होता है व्हाट, कि यू डोंट नीड टू गेट वाइप्ड आउट। ऐसे रूल्स बनाने पड़ते हैं कि आप वाइप आउट ना हो जाओ। आपको वाइप आउट, आप जब वाइप आउट नहीं होंगे तो ऑप्शन बाइंग आपको, जब वो जो ट्रेंड आएगा या फिर आप जो स्कैल्पिंग करके या कुछ भी करके जो आप प्रॉफिट्स ले रहे हो, दैट थिंग वो आपको देगा ही। तो ऑप्शन बाइंग में आपको वाइप आउट नहीं होना ना, उसका पूरा वो कंडीशंस रखना पड़ता है। जैसे इफ मार्केट इज, इफ निफ्टी 50 इज फॉलिंग हियर, यू शुडंट बी इन कॉल्स आफ्टर दिस। एटलीस्ट चलो इफ़ यू हैव अदर रूल्स कि आई विल वेट फॉर 1 आवर, 1 आवर चार्ट में देख रहे हो, कहीं पे भी आप देख रहे हो, इधर इधर अब भी ये पॉइंट पे भी अभी के अभी आपके पास कॉल्स मुझे नहीं लगता होने चाहिए। अगर होते हैं तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे होने चाहिए, जब आपने पोजीशंस यहाँ कहीं बनाई हो तो आप गुड, मतलब ज़्यादा होल्ड करने वाले हो तो ही ठीक है, वरना यू आर डूइंग 2 to 3 days 1 week वाला पोजिशनल, तो नहीं नहीं ये तो निकल ही जाना चाहिए ना। तो दैट इज़ व्हाट, यू शुडंट ड्राइव ऑन रॉन्ग साइड एंड मीट विथ एन एक्सीडेंट। तो उससे बचो तो हो ही जाएगा। कैन यू सजेस्ट समवन टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर आफ्टर लीविंग जॉब? नो 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 नो, नेवर नेवर ब्रो। बिकॉज क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो यू शुड बी प्रिपेयर टू लूज वॉट एवर यू आर पुटिंग ऑन द टेबल। आपको पता है वो, अब यू वेन एवर इट इज़ लॉस्ट यू शुड बी एबल टू डील विद दैट लॉस, मतलब वो यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट। बाकी तो यार टेंशन में लॉसेस ही होंगे व्हेन यू वांट टू इंक्रीज दैट कैपिटल। सर शॉर्ट मार दो रिलायंस एंड उड़ा दो। अभी हो गया, जियो पे ही किया, वो लोकल नेटवर्क है मेरा, उधर गुजरात में होता है GTPL, गुजरात समथिंग उसका है, लोकल है अपना, अच्छा चल रहा है इधर। बट अभी स्टेबल नहीं है, पर वो भी अच्छा है। तो अभी मैंने मुकेश भाई का 5G कर लिया चालू। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ कोर्स। मैं ऑफिस तो नहीं जाने वाला।
What is your SL in PE? The blue line, Mayank, blue line is the SL of my PE. मतलब वो कल के लिए obviously I'll trail it further. तो कल तो पहले मैं कॉस्ट पे रख दूंगा SL को. So it will get here 24 125. देन फिर कल भी डाउन ट्रेंड रहा तो एक लो करके देखते हैं, फिर नीचे नीचे ले जाएंगे इसको SL को. आर यू फुल टाइम ट्रेडर और यू डू अदर बिजनेस? और आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर. एंड वैसे तो मैं ट्रेड नहीं करता, तो ये सब करता रहता हूँ भाई बोर्डम में. सो आई लव कनेक्टिंग विथ अदर पीपल, पीपल लाइक यू, लाइक माइंडेड पीपल. सो यही फन है अभी तो. चिराग, यू आर डूइंग, इज देयर एनी क्लासेस चिराग सर? नहीं ब्रो, नो क्लासेस. दिस थिंग यू कैनॉट लर्न फ्रॉम एनी वन इन एनी क्लासेस. जो भी कोई भी क्लासेस है ना, यू कैन ओनली लर्न द कंसेप्ट, द थियरीज. जब प्रैक्टिकली यू हैव टू डाइव इन, यू हैव टू लूज मनी टू अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड, मेक अ स्ट्रेटजी, मेक मिस्टेक्स एंड मॉडिफाई योर स्ट्रेटजी. वैसे ही होगा. काइंडली कीप इन इंग्लिश सर, नॉट एवरीवन नोज हिंदी. ओके, आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम. इज देयर, that's a cute disturbance, by the way. Thank you, Gagan. Rajesh, Chirag, you are doing great. You are a real inspiration. I like you always. Trade in monthly expiry 25 lakh. Do you think decent to start in option buying? So, what I think in option buying, you need to first calculate the amount of drawdown. Whatever you the strategy that you are doing, you have to calculate the drawdown based on it. Means for what I am doing, what I keep as a highest drawdown that I will be facing. Like, what would happen if market doesn't move, if it starts consolidating? I would be buying calls, I would be buying puts, and I would be making losses. So how long can I go against how long can I go in that drawdown phase? Can I sustain? So when I'm doing with one lot, if it is 25 quantity for now, so I would be prepared to lose 25,000. So if I'm doing one lot, which if you do in the money, like my strike price which I select is 300 to 400 points away, so it would be costing 15,000 rupees for maybe one lot. I'm just estimating things because it depends on the time of the month. But when you do it, you should be ready to lose 25,000 and you should be having 50,000 to do one lot. Though you are doing one lot with only 15,000 rupees, you should be having 50,000, because what will happen is when you start trading, the market consolidates. For example, it happened in July. July, if you will check the chart, this thing, there was the, I think it was my max drawdown phase. So I lost around, if I had calculated it based on the Nifty 50 index chart, I lost around 1,000 points. So that is the drawdown phase, you need to face it. Now since I have crossed it, I sustained that. Now I'm using only half of the, not even half. Currently I'm using more than half. Yeah, it would be 40. How much am I using? No, I'm currently in this puts. I have, since I have bought less puts, I'll be using less than half of the net profits that I have. So even if I lose 20% from here, I will be sustaining in the market. Now this 1,000 points drawdown will not affect me because my profits will be wiped out. So that's how it is. 1,000 points you should calculate, but if your strategy is different, you should calculate based on your strategy. भाई मैं खुद ही 5G नहीं चला पा रहा, आपने कैसे चलाया? No, this Reliance Jio is working perfect. 5G is working perfect at my place. शायद भी शायद मेरे घर के पास एक गार्डन है, उधर ही इसका टावर है, इसी वजह से. कोडिनार से हूँ, नो राजकोट से हूँ, ट्रैवलिंग ट्रेडर. By how much you made on 4th June? I took a break on 4th June, bro. My strategy would have worked. If on 3rd, sorry, the 4th June it was a gap up. I don't remember the timeline. I want to go there. अच्छा अच्छा. If you go there, gap up से पहले gap up हुआ था एक दिन, 3rd या 4th June, whatever day. I would have been in buy, but ये तो सब subjective होता है. In stock market you are always like, मैंने ये किया था. But no, what I follow उसके basis पे I would have been in the buy position and the gap वो hold ही रहता मेरा. फिर होता है gap down next day, शायद 4th को वो gap down होता है और वो ऊपर से पूरा fall शुरू होता है and then 1,000 points here and there. तब जब ऊपर retest होता है तब I would have sold. So मेरा चलता उधर, but मैंने तो break ही ले लिया. I didn't want to mess up my profits at that time. बहुत वो टाइट चल रहा था तभी.
What is the reason to close C and shifting to PE at the same time? Well, I do it that way only. So कॉल निकालता हूँ पुट रखता हूँ पुट निकालता हूँ कॉल रखता हूँ दैट इज द होल थिंग stop and reverse maybe. How you increase lot size in option buying means after how many trade like that? Okay, the ये increasing the quantity is the toughest thing in options buying. For example, you are trading with two lots, 50 quantity, and you made like 500 points. Great. In a month maybe. Chalo, 500 points you got it. You are now at 25,000 profits in a month. What you will do is increase two more lots. Chalo, you are going safe. You increase one lot, 75 quantity. Now you are at 75 quantity, and if you lose about half of the points, it is going to affect those profits that you had earned very badly. So that's where the psychology cracks. Ki bhai, because the PNL has increased, profit and loss both have increased. Profit you are seeing more, losses also you are seeing more. When you see that extra loss, you will book it, you will mess up that psychology. So increasing is very hard, and to sustain, for example, I had a good trends right now in November month. So if I'll increase quantity right now and December is stable and I'm facing losses, then I would have faced losses in increased quantity, which will take away a lot of those net profits that I booked in November. So increasing quantity in option buying is the toughest, and I think you should have stable. You should always think that keep the 3/4 amount of your capital always in reserve mode. Only use 1/4, maybe less. People said use only 10% and all. I think you should follow that. There may be support or resistance. The level of last day, how you play there. Uh, बस आई डोंट डू एनीथिंग दैट इज हाउ आई प्ले ऊपर ऊपर जाएगा देन विल बाय कॉल्स नीचे जाएगा विल होल्ड पुट्स बस यही है आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस स्टाइल टू एनीवन जस्ट से इट अगेन बिकॉज this is very high risk high reward. Please do not try it. You know, one trade you miss it, it trends, you will be quitting with losses, face lots of losses. Option buying is very risky. Most people plan how much they can make. Chirag bhai plan how much he can lose. The best loser wins in the game of trading. Exactly, exactly. I'm not having targets right now. I'm only having this thing, uh, SL, where I know I will shift no matter what, how fast it goes. Like if I put it 24 200 and there is a candle which goes like straight up till 24 400, I would be exiting puts and buying calls at 24 400, even if it is 200 points above my SL. That is the discipline you have to do it. ફોરેક્સમાં કામ કરો છો? ના, ફોરેક્સમાં નથી કરતો બોસ. ओनली निफ्टी 50 ऑप्शंस. ब्रो बोनी सूचक वाली ट्रेड को लाइव स्टॉप कर दिया आपने, उस पे क्या अपडेट है? हम वॉच नहीं कर पा रहे. हाँ, ही स्टॉप्ड शेयरिंग लाइव. ही डजंट लाइक एक्चुअली वो कमेंट्स एंड ऑल. इज ओके, ही डजंट लाइक. वो नहीं करना उसको शेयर यार. ड्रैगन व्हाई नॉट ट्रेड फ्यूचर्स? हाँ, it has, because it has unlimited risk, and my losses also get limited in this options buying, since it is monthly plus in the money. तो ऑप्शंस की वैल्यू थोड़ी जाती है 20% चलो मैक्स मैक्स 25% ऐसा ही जाता है. आई डोंट मेस अप, मतलब फ्यूचर्स में 300 पॉइंट्स कभी उल्टा गैप आ गया तो इट विल बी अ लोचा. कैपिटल कितना है ब्रो? कैपिटल नहीं, अभी तो प्रॉफिट आज का लॉस मिला के 60 लाख जितना होगा वही कैपिटल है अभी तो. मतलब वो भी विड्रॉन है, कुछ यूज़ तो नहीं करना है अभी. कुछ 30-40 में ही लड़ना है. 30-40 का मैं बाई करता हूँ. 40 लाख के ऊपर गया था अभी लास्ट जो कॉल्स लिए थे. दे हैड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर डन. तो हाँ, बस उतना ही रखना है. हु डिड यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम फॉर ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट? My dad used to trade, so he basically loves following trends, and he used to make पूरा logbook भर देते थे. He used to fill it up with his back test, manually back test करते थे, सब कुछ करते थे. So he wanted a trend following system. He made it possible actually. Why do you prefer any indicator or EMA for further confirmations? Nobody, no. Well, indicator would be the same. For example, I'm not looking at this indicator, any indicator, but any moving average 21, 50,
Whatever you like should have been crossed by now. At least you can see that now. You don't need an indicator for that. Never see your PNL during trading session. It influences your emotions. Yeah, man. I never see it, but now that you remind me, let's check it once. नेगेटिव ही है कॉल्स के लॉस तो बहुत, क्योंकि मेरे पुट्स में कम क्वांटिटी है तो वो कॉल्स में नहीं कवर करेगा आज, तो लग नहीं रहा, पर कुछ भी हो सकता है टिल डे एंड। कुछ भी। एक ही मिनट, हाँ। कॉल। हेलो। वोल्टर जमी लीधું? हम्म। ओके। How do you maintain the patience during quick reversal and panic fall? Also, I saw sometime you were in good profits but did not book. Yeah, so I had bought calls here. Okay, I was at profit here. Okay, but then when I don't know if it is going to go more up, more down, तो ये जब आता है तब दिखता है, तब मैं करता हूँ। मैं प्रेडिक्ट नहीं करता कि चलो इधर तीन कुछ भी अमाउंट फिगर मिल रहा है, वो नहीं होता है। ये आया, देखा, फिर किया, तो ओपन प्रॉफिट हमेशा जाएगा। आई विल नेवर बी बुकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। आई विल नॉट फील सैड अबाउट नॉट बुकिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब या दैट इज द होल प्लान कि रिवर्सल दिखेगा अभी तो। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ टुमारो देयर इज अ गैप अप एंड सीधा 24,200 के ऊपर, तो कुछ नहीं मिलेगा, मे बी लॉस बुक होगा, कुछ क्या। सो दैट्स हाउ इट इज। Please explain on what time frames do you analyze the Nifty 50 index and in which time frame do you start taking trades? अभी तो 15 मिनट्स ही चल रहा है, बिकॉज फर्स्ट आई यूज टू यूज 5 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसा होता था, बट अभी जो मूवमेंट है वो 15 में ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि इट इज द रेंज इज वेरी हाई, वेरी हाई। आज सुबह द इट वाज क्लियरली सीन द रेंज इज गोइंग टू बी क्रेजी, बिकॉज जैसे ही फास्ट मूवमेंट होता है ना। हाउ मच परसेंट ऑफ रिस्क ऑन कैपिटल पर ट्रेड डू यू टेक? शायद 10-20 जाता होगा भाई। वो परसेंटेज वाइज यू कैनॉट अज्यूम इन ऑप्शंस ना। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग डीप मोर डीपर इन द मनी, तो that percentage will decrease. Now if I'm going at the money, out of the money, that percentage will increase, मतलब loss वाला। तो percentage is just that shouldn't matter to you, I mean, in options buying. Even when you are making money, you 100% shouldn't attract, 200% shouldn't be attractive, because that can happen anytime. Can you explain your system? Oh yes, it is trend following system. So I follow the footsteps of Nifty 50. I don't know, I mean, दैट्स इट। मतलब वो एक एक ट्रेड के प्लान के ऊपर होता है, दैट इज नॉट अ फिक्स्ड सिस्टम। डू दिस डू दैट, बुक राइट नाउ, और बस ऐसे ही जस्ट ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड। नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा, दैट इज द होल पर्पस। भाई हमें तो लाल दिखे तो पी, ग्रीन दिखे तो सी। ओ ओके। भाई हमें तो लाल दिखे तो पी, ग्रीन दिखे तो सी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ बताओ कैसे करे। वही मैं भी वही करता हूँ भाई, बट जब वो जो मेरा पीएनएल जब ग्रीन होता है तो आई जस्ट कीप ऑन होल्डिंग इट। ग्रीड रहता है कि भाई बढ़ा लेते हैं इसको। इज योर एस एल स्टिल एट 24,200 और रिड्यूस बाय? नहीं, एस एल टूडे फॉर टुडे इट इज 24,200 ओनली। कल विल रिड्यूस इट टू द कॉस्ट प्राइस ओवर हियर। आई विल रिड्यूस इट टू द कॉस्ट प्राइस हियर एंड देन नीचे नीचे एक एक हाई का लेके जाएंगे फिर। यू डोंट आई डोंट मतलब एक एक मतलब ऐसे नहीं करता, क्योंकि देर इज नो पॉइंट इफ दिस हायर सॉरी लोअर हाई इज ब्रोकन, तो ही एसएल का देखना है। तो पहले तो ये आएगा ना, तब दिखेगा ना ये रखना है क्या रखना है। तो देखते हैं अभी। सीम्स लाइक 23,900 है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। yes, that is the whole purpose idea कि I have taken less quantity. If it breaks from here, I'll increase the quantity. Sorry. Also, I see that you take a minimum of three strikes of at least 1,500 quantities each. I want to understand whether you take the entire 1,500 quantities in one go, or you take them at different intervals until your SL is hit. No, it is all at one go with a basket order, market order. It's all at one go. Because idea is कि मैं 4,000 I take 4,000 quantity
of calls or puts, whatever I am doing, 4,000 or 6,000, depends. So currently I have taken 4,000 puts. So the idea is to be bearish in a one single strike price, but since there is less liquidity, I cannot do that actually. That is the whole problem. Why not Bank Nifty? I'm not able to execute both at once. See, for example, today's fall was the prime example. If this and then I have to trade Bank Nifty also together, I would have messed up entry exits of in one of them. So I don't want to mess that up. So एक single quantity ही सब करना है. तो वैसे तो मैं strike price I never used to divide the strike price also, but since I have to divide now, I have to be more focused on single thing. Brother, make a video on your office tour. But I don't go to office, and is you are doing just trading as your full-time career from starting or doing something? No, no, I don't go to office. I have office. My brother goes there actually. We have imports business, and he handles it very well. He earns more than me. Good thing going on. That is less risky. Are you planning to switch to CE if it does not break below and crosses 24,000? No, no, 24 200. But yeah, let's see. Tomorrow's price action decides that. Now there is nothing to see today. I think it is a clear downtrend and we are in puts. That's it. मतलब रिवर्सल आएगा तो दिखेगा ही ना. प्रॉफिट विल गो अवे. लेट इट गो अवे. दैट इज फाइन. सर, जब लॉस होना होता है तो होल्ड करते हैं, जब प्रॉफिट होना होता है तो एग्जिट लेते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए. होना होता है तो होल्ड. हाँ, वही उल्टा करना है ना ब्रो. यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू बट यू आर नॉट डूइंग इट. जस्ट जो फिक्स्ड पोजीशन लेते हो ना, तो जस्ट थिंक कि व्हाट इज योर एस एल. नाउ इफ मार्केट गोज अप और डाउन, इट शुडंट मैटर टू यू. यू नो दैट एस एल वो कितना जाएगा पैसा, वो पता होता है. तो फिर आई डोंट थिंक देर शुड बी एन इश्यू. उस टाइम पे करना पड़ता है जस्ट लॉस बुक करना. बी हैप्पी यू बुक द लॉस बिकॉज यू मैनेज द रिस्क. इफ यू हैडंट बुक द लॉस, you would be trapped someday. Not just that day. It will save you. You didn't book loss, it will reverse. You will have fun कि wow, I didn't book the loss. But then someday it will just trend and it will go away and will take it all. That is why option buying or option selling or anything that you do in stock market, you have to just uh, what was I saying? Shit, I forgot. I started reading that side. You have to focus on not getting wiped out. Don't get wiped out. Just any good strategy, 90% accuracy, but that 10% should be enough to not wipe you out. That is what you have to do. You just have to sustain. It will give you money. Gap filling is done. Do you think market will go up now? I don't predict the market, so I don't know. Let it go up, down, wherever it wants to go. What was your psychology 15 days back when you was in losses more than 60 years? No, I was not in losses. That was a drawdown actually, because this is my fifth account. So I use my family accounts, and each one of them had profits. So basically, if I had used one account, okay, though then I would be in a minimal profits when that drawdown was there. I would be in a very less profit. I think I saw only 3 lakhs of profit once when like after the last max loss day. I remember I only had 3 lakhs of profit for the whole year. I could have thought that wow, this doesn't work, but then I did what I was doing, so it is back to back, not back, it is backer than back. It is like at all time high profits right now. But yeah, we reduced it in the last 2 days a bit, a lot of it actually. Let's see. Do you check OI and all? No, I don't check OI. I don't think OI even works well because it is just showing you liquidity. I don't think it is showing you anything else. There is no point in seeing OI because what you are seeing is a relation, like open contracts between a buyer and a seller. If you are seeing OI of calls, you are seeing buyers and sellers. I don't see why people see it as there is OI, so there will be resistance. I mean, there are buyers also. That's why there is an OI. I don't understand the like how it should affect. It should only tell you liquidity, and there will always be liquidity nearby.
currently, without seeing the OI, I would say that 24,000 CE must have increased, and the 24,900 P are in trouble, and all, like, this is just seen in pricing also. I think so. I don't know if you have made a strategy around it, if it works in selling. I don't know. Maybe there could be a systematic setup to figure that out. Okay. Oh, I point is good. Thank you. Oh, yes. Thank you. Sound is clear. Sound is very low. Just tell me your entry criteria. Yeah, so previous low, this was the, I don't know if mouse, this thing was the entry. Sorry, this thing was the entry. This thing was the SL. Now same SL was the same today. It came here, so that was the entry criteria of puts. Now it could have immediately gone from here to here, so I would have exited, na. Like it didn't. That's why I'm holding. Like I didn't know. Nobody can know where the Nifty 50 is going to go, or any stock, anything is going to go. You have to plan your position around what is happening based on the past data. So if you see the past data, the low is broken, everything is just aligning with the data. So I could be confident here, but same way, if it has become a green candle, same size, I would be back to calls. It didn't happen. I didn't predict a fall. I didn't buy so that I would be earning. No, I didn't buy puts that way. I just bought it because it went down and now it is going down after that. I'm lucky me, I guess. What if a beginner want to learn? Can you tell the roadmap? It would be helpful for beginners. Beginners should read Varsity. Varsity is superb. When you understand the theory, you will be when you and after understanding the theory, when you will be looking at live markets, you will be able to think much better. So, for example, I was in futures, but when I read Varsity, I understood the theories. Then I understood that in the money options work the same way as futures, obviously different, but I can do that in my strategy since my accuracy is low. So I'll be getting lots of loss making trades, and if I can reduce those loss making trades, means futures the loss is high and the same in the money options give less losses, then my loss making trades would reduce. So that is why I'm in options and not in futures. सर इतना फार एस एल रखा तो बहुत लॉस होता है, मैं टाइट एस एल ट्राई किया बट इट इज़ नॉट. सो द एस एल जितना नियर होता है उतना एक्यूरेसी कम होगा आपका, और नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा बढ़ेंगे. हाँ, પુટના પ્રીમિયમ એક જ મિનિટ, ફ્યુચર શું ચાલે છે? હા ઓલું પતી ગયા ને, આ તો જો 100 નથી રહ્યું. આ ડિસેમ્બરના કેમ ઘટી ગયા આટલા? હા, કેટલું થાય આ? 100 આપણે તો અરે સવારે 150 હતું. ઓકે, સવારે 150 હતું ડિસેમ્બરનું પ્રીમિયમ ડિફરન્સ, અને અત્યારે 100. હા, આપણી ફેવરમાં આવવું જોઈએ. મેં જોયું નથી પીએનએલ, એક જ મિનિટ. જસ્ટ અ સેકન્ડ, હોલ્ડ ઓન ગાઈસ. હા, શું કહો છો તમે? અત્યારે -70, 70 80. એટલે ઈ कितना टाइम किया टू लर्न वार्सिटी आई गेस. मैं आई वाज रीडिंग, मतलब पार्ट्स पार्ट्स में रीड कर रहा था, तो बहुत टाइम दिया था मैंने तो.
थोड़ा चैप्टर पढ़ता था फिर ब्रेक हो जाता था। सर इनिशियली फंड कहाँ से मैनेज किया था? है थोड़ा, फादर्स फंड है, वो रिच है थोड़े। Trade to make money, not to be right all the time. This is not a university exam. Correct. Sound too much now. Yeah, man, थोड़ा disturbance हो गया था अभी, I think. Voice cracking. Okay. Okay, 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 okay. Sorry, yeah. वो मैं शायद एक मिनट चेक करता हूँ. Excellent connection, I guess. Good to go. Too loud भाई. Okay, sorry. भाई मजाक नहीं कर रहा ना, तू सच में लाउड है ना? एक मिनट चेक करता हूँ इधर. Yes, it is. Oh shit. Sorry, 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 guys. ये कैसे हो गया लाउड? अभी तक तो सब ठीक है, ये भी लाउड ही है, मैं 100 ही कर देता हूँ. वाओ, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है. मेरी सिलेक्शन हो गई. मेरी सिलेक्शन हो गई. सॉरी, वो बकवास मीम डाल दिया मुझमें मैंने. अरे जहाँ यार. वाह, वॉइस तो मस्त हो गया सडनली. भाई ये स्ट्रीम चालू है इसलिए हो रहा है या फिर मैं फोड़ दूँ? ओ माय गॉड, कमेंट्स किधर गया? ओह भाई ये, व्हाट द हेल इज दिस शिट? ओह शिट. ओह नो 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 शिट. Okay, sir, if you speak English fluently, you don't mind. We are from Hindi medium and government school, and मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो किसी का कमेंट आ रहा है कि दे उनको वो नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ. और कोई बोल रहा है कि हिंदी बोलो, गुजराती इंग्लिश बोलो. यही चल रहा है. ओके, डू यू फॉलो स्मॉल पिवोट्स और लार्ज पिवोट्स? मैं आई थिंक लार्ज पिवोट्स बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जनरली क्या होता है कि प्रॉफिट वाला पोजीशन लॉस में हो जाता है, और मतलब वो डिफरेंस ज्यादा रखता हूं मैं, जो रेफरेंस लेवल होता है उसका. निफ्टी एनालाइज, क्या एनालाइज करे भाई? अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, यही तो है अभी. प्लीज एक्सप्लेन द कंसेप्ट of difference between spot and future price and how can we use it for our benefit. So in the morning, okay, let's do something. December, this is December. This cannot be December. This is December. Okay, so this is December futures, and what are we seeing here is 300. Okay, this candle started at 303, and this candle, wait, इसका वो link, हाँ दोनों में आएगा. If you can see the difference, 303 open price and here it is 467.5. डिफरेंस कितना है? 164 रुपीज का डिफरेंस है. अभी लाइव देखो. लाइव कितना है? फक. ओह सॉरी, नो अब्यूज. 100 एंड, ओ मतलब दैट इज व्हाई इट इंक्रीज्ड ना. 190 जितना हो गया. सो दिस थिंग, स्पॉट फेल बट फ्यूचर्स डिडंट फॉल सो मच. तो ये हुआ, और उसकी वजह से पुट्स में कम मिलता है प्रॉफिट्स, बिकॉज जो अपने ऑप्शंस होते हैं वो फ्यूचर्स के प्रीमियम के बेस्ड पे होते हैं. तो जैसे कि मेरा ऑप्शन इन द मनी ऑप्शन है, तो उसमें तीन पार्ट्स है. एक है इंट्रिंसिक वैल्यू जो एक्सपायरी के दिन होगी बेस्ड ऑन निफ्टी 50 स्पॉट. दूसरा उसका प्रीमियम है, फ्यूचर्स का प्रीमियम है. तीसरा उसका है टाइम वैल्यू प्रीमियम. तो टाइम वैल्यू प्रीमियम तो अपने आप जाएगा ही जाएगा, पर जो फ्यूचर्स का होता है, फ्यूचर्स जितना घटेगा उतना मेरा ऑप्शन बढ़ेगा. So that is how spot futures thing will work. And let it go. Futures chart same here. But yes, the futures premiums increased.
right? Right. 83, 180, yeah, 185 points. Wow. Yeah, morning it might decrease a bit or something, maybe because it is falling. चिराग भाई, इंडियन मार्केट तो अच्छी चल रही है, बट हाउ टू लर्न क्रिप्टो मार्केट? उसमें हमेशा एसएल जाता है। आई डोंट नो क्रिप्टो, मैं आई नेवर फॉलोड इट, मतलब आई विल फॉलो इट वंस दिस थिंग जीरो द लेट्स मी ट्रेड इन इट, मुझे उसमें ट्रेड करने देगा तब करूंगा, क्योंकि रेगुलेशंस ठीक नहीं है। कोई भी ब्रोकर ऐसे ही चला जाता है, तो मैं किसी में ऐसे फंड नहीं डालूंगा ऐसे, तो मतलब क्रिप्टो कभी ट्राई नहीं किया। और वैसे भी 24/7 कौन देखता रहेगा फिर चार्ट्स। एनी बुक रिकमेंड फॉर ट्रेडिंग? एक है, आई पोस्ट अ पिक्चर, मतलब it was very advanced. Varsity is the best actually. You don't need anything else. Varsity by zero था। कैसे हो भाई? फॉलो यू सेंसिबल। यस चहल जी, थैंक यू। आई एम ऑल गुड, आप कैसे हो? सैम लर्निंग स्मॉल क्वांटिटी। ओके। मुकेश चौधरी जयपुर, यू नो आर मदर टंग हिंदी। मुझे, हाँ हाँ, आप बोलो, वो लैंग्वेज सीख जाएंगे आपके लिए भाई साहब। ऑल इज वेल ट्रैवल। निफ्टी कल का हाल है। ओके। हाउ डू यू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस? इज इट बेस्ड ऑन डेल्टा? No, no, man, I go for 300 points plus 300 to 400 points in the money. But I think one should go with delta every time because my quantity differs based on futures. So I can't show positions ना, वो है प्रॉब्लम। चलो हटाने दो। तो कैसे सिखाएंगे? ओके। सो इफ यू बाय एट द मनी 0.5 डेल्टा होता है उसका। और जैसे कि हमने किया 25 क्वांटिटी, नहीं सॉरी, चलो अपने हमने किया 2 लॉट्स 50 क्वांटिटी, तो उसका होगा 25 फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग, वो 25 के मुंह पे चलेगा। मतलब इट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज बेस्ड ऑन 1 लॉट ऑफ फ्यूचर्स। तो मैं लेता हूँ शायद 0.7 अराउंड का कुछ होगा। दैट डिफर्स एवरी टाइम बिकॉज मेरा मंथ का स्टार्ट होगा तो वो कम होगा उससे। मंथ का एंड होगा तो वो ज्यादा होगा। मंथ का एंड मतलब 10 दिन पहले या एक हफ्ते पहले लिया होता है, तो वो डेल्टा ज्यादा होगा। सो दैट वे माई क्वांटिटी डिफर्स एवरी टाइम। एंड वैसे भी मैं कॉल्स और पुट्स में देखता हूँ स्पॉट के अकॉर्डिंग, मैं 300 पॉइंट्स इन द मनी जाता हूँ। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज पुट्स में मेरा क्वांटिटी कम रहता है बेस्ड ऑन फ्यूचर्स। इफ यू सी, डेल्टा कम रहता है और कॉल्स में ज्यादा हो जाता है बिकॉज जनरली इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर्स। सो मुझे फ्यूचर्स को एक्चुअली लेना चाहिए और उसके बेस पे करना चाहिए, बट सिंस इट्स वर्किंग कि मैं बुलिश फेज में ही ज्यादा कमाया है, मतलब कॉल्स में ही ज्यादा पैसा मिला है, तो आई थिंक it is fair enough कि we should be see more on the call side only. What exactly on varsity? Can you share the link? Varsity, I read modules. मैंने तो मॉड्यूल्स ही पढ़े थे। फ्यूचर्स ट्रेडिंग गुड मॉड्यूल है, एकदम मस्त समझ में आ जाता है सारा ट्रेडिंग, प्रीमियम्स का भी। ऑप्शंस थियरीज एकदम परफेक्ट। एंड देयर इज ऑप्शन स्ट्रेटजीज विच यू शुड स्टडी बिकॉज एक नॉलेज अच्छा मिलेगा प्रीमियम मूवमेंट का उससे। So maybe someday you will be able to make a plan according to it. Okay. कैमरा का विजन, मैं कैमरा चालू है मेरा? कैमरा ही चालू नहीं मेरा, लैपटॉप का वो ना वेबकैम पूरा पुराना है लैपटॉप, तो कर सकते हैं नहीं कुछ इसका भी, वो भी वेबकैम यूज कर सकते हैं यार। नेक्स्ट मैं करता हूँ, चलो साथ में वो वैसा यूट्यूबर स्ट्रीमिंग जैसा फीलिंग आना चाहिए, मतलब ये ऐसा नीचे वो मेरा स्क्रीन हो, इधर चार्ट्स चल रहा हो, और इधर मतलब फास्ट फास्ट कुछ हो रहा है, प्राइस 1 मिनट में सेट कर देंगे हम, ऐसा फास्ट फास्ट रहेगा। चिराग भाई, हाउ डू यू सी पार्टिसिपेंट डेटा? सॉरी आई डोंट नो पार्टिसिपेंट डेटा। शायद आप रिटेलर्स का, एफआईआई का, वो जो लाइव, आई डोंट थिंक ऐसी हम शाम को देख सकते हैं आई गेस।
I also started from modules, helped me a lot in trading. People avoid it due to the number of modules they have to read a lot. Yeah, but they are बहुत वो कम है ना, शॉर्ट शॉर्ट मॉड्यूल्स है, तो आई थिंक यू शुड ट्राई इट। मतलब एक एक दिन में एक चैप्टर करोगे फिर भी बहुत इजीली हो जाएगा, अच्छे से सीखना मिलेगा उसमें से। हेलो रियल। यूज्ड टू ट्रेड इन स्टॉक्स और इंडेक्स? इंडेक्स ओनली, स्टॉक्स में बहुत ट्राई किया है, बहुत वो स्ट्रेटजीज बना के एंड ऑल नॉट, बट नॉट नॉट फॉर मी। वो ज्यादा मैनेज नहीं होता एक्चुअली स्टॉक्स में। आई कैन स्टार्ट एंड वी कैन डू लॉन्गर टाइम फ्रेम्स, 1 आवर में, 1 आवर में ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट देन अगेन योर फोकस शिफ्ट्स, बिकॉज इन निफ्टी 50 योर साइकोलॉजी इज डिफरेंट एंड इन स्टॉक्स इट इज डिफरेंट, तो वो साइकोलॉजी पे भी अफेक्ट करेगा। एंड एग्जीक्यूशन, इफ देर इज अ वाइल्ड मूव लाइक टुडे, एग्जीक्यूशन विल बी मेस्ड अप। तो सांस ले लूं, चलते हैं। केम शो। यस धर्मेश भाई, डूइंग ऑल गुड। बस अभी शटर क्लोज करिए चाहिए। 10-20 minutes। Swing is better. Yep, swing is always better because, well, it is highly risky, of course. Swing becomes riskier, but yeah, reward also better. Nifty closing near day low. Yup, 23,900. Let's close it, man. बहुत हो गया आज का ना। Now tomorrow we'll be seeing कि ये फेक फॉल, एक्सपायरी फॉल था, अच्छा खासा फॉल था। जो भी हो, अपने को क्या है। कॉल्स ले लेंगे कल, अगर ऊपर जाएगा तो, नीचे जाएगा तो होल्ड एंड होल्ड। वाओ, ये दिस थिंग इज लुकिंग। अच्छा, ये देखा आप सबने? ओके वेट, आई शो यू समथिंग टुडे व्हाट आई सॉ। किधर? हाँ, और ये किधर गया ये? अच्छा, टारगेट हिट हो गया इसमें। ओह शिट, सब चला गया इसमें से। अच्छा, तो बेसिकली ये बता रहा था ये इंडिकेटर कि ये टॉप 1 है, टॉप 2 है, टॉप 3 है, तो बन के ये जो बेस लाइन इसका इधर आ गया, तो बेस लाइन क्रैक हुआ 125 पे ही हुआ, 24 125, एंड दैट्स वेयर यू गो शॉर्ट एंड ऑल। बट उसका उसमें जो इसने पैटर्न दिखाया था, ऑल चार्ट पैटर्न्स ने, वो शायद वो हो गया, मतलब उसका टारगेट हिट हो गया। तो वी कैन सी दिस वन बेरिश पेनेंट पैटर्न। ये बता रहा है 23,750 जा सकता है, बट इसका तो कैलकुलेशन कैसा होगा कि ये लाइन है, तो ये बेरिशनेस कंटिन्यू कैसे रखे, तो ये उसकी वजह से ये बोल रहा है। दैट्स दैट आई गेस। ये मेरा टारगेट नहीं है, इन केस यू आर वंडरिंग, दिस इज इंडिकेटर, एन इंडिकेटर ऑन ट्रेडिंग व्यू, ऑल चार्ट पैटर्न्स। This is not my target. I am not recommending this trading this one or anything. Okay, bro, are you going to hold? What is next target? Yes, I am going to hold. आज तो hold, yeah. Now it's over. है Such I don't trade after 3:15. So yeah, it's over. Done and dusted. Let's go to the gym. थोड़ा बनाते body. રવિ ભાઈ શું કે રાજકોટ? ઓલ ગુડ ભાઈ, તમે કયો? આવો ક્યારેક। हितेश कुमार अग्रवाल, ऑल चार्ट पैटर्न पेड इंडिकेटर, इट्स नॉट अवेलेबल बेसिक वर्जन ट्रेडिंग। हाँ, मेरा भी चला जाएगा भाई अभी ये। आई एम नॉट बाइंग दिस ब्लैक फ्राइडे। मेरा थोड़ा वन 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 मंथ का बाकी है। आई वांटेड टू एक्चुअली टेस्ट सम थिंग्स, तो उसकी वजह से लिया था, बट या नहीं जरूरत है ना। इवन आई ऑल्सो डोंट नीड दिस। प्लीज गिव इंसाइट्स ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। बस भाई उसमें तो रिस्क मैनेजमेंट, जो जब भी ट्रेड लेते हो, तो वट एवर यू हैव डिसाइडेड, चलो फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग दिस बेरिश पेनेंट, आपने देखा इधर ब्रेकडाउन हो गया, तो इफ योर एसएल इज हियर कि चलो फर्स्ट हाई नहीं पर सेकंड हाई इधर ये क्रॉस हो जाए 125, तो देन यू हैव टू एग्जिट। इफ यू हैव डिसाइडेड दैट वो होता, अगर इधर से चलो ऊपर जाता तो आप होल्ड करते। तो जो डिसिप्लिन जो है, वो जो रिस्क डिसाइड किया था, वो फॉलो करना पड़ेगा विद डिसिप्लिन। दैट इज द होल रिस्क मैनेजमेंट।
जस्ट अ सेकंड ना कल गैप अप शायद ओके लेट्स गो कॉल्स ले लेंगे ब्रो ओके आई बी टॉकिंग इन इंग्लिश सर व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड so basically I studied in a school in Rajkot. It's a good school and I might have not scored good marks in economics. Maybe I failed in economics in my 12th. Maybe. Overall, it was like 41. In 12th, I had like 40 to 45 percentage, something like ऐसे मतलब close cut हो गया मैं मतलब निकल गया बच गया. So I guess I failed in economics if I'm not wrong. And then I went to college in Ahmedabad and then I did my BBA there. That also copied and मतलब it was not that like रियल में नहीं हुआ कुछ ऐसा बीबीए जैसा एंड देन वो पास वास कर दिया पर देन आई नेवर वेंट टू टेक माय डिग्री ओनली ब्रो इट इज स्टिल देयर और इट इज डिस्ट्रॉयड आई डोंट नो वेयर इट इज सो या आई वाज नॉट गुड विथ स्टडीज and economics and all this and now I'm doing this finance jargons here I can understand. Yeah, man, BBA is just to pass your time till you realize that MBA is coming, and then you realize that wow, you have wasted 5 years of your life. भाई हम वेरीफाइड आपका वेरीफाइड देख सकते हैं क्या लास्ट 6 मंथ्स हाँ एवरीथिंग इज देयर ना लास्ट 6 मंथ्स का तो आई गेस है ही दो सेंसिबल गो टू सेंसिबल वाट आई शो यू दैट आई कैन शो ना sensible.com login okay अवतारे मल्लिका ओके रवि भाई I am price action trader. Oh, what did I say? Did I say something else? Sorry. You go here, then you go to verified by sensible. You go to no, you go. ये जो long term showcase, long term PNL. There, this is where you search. Search for traders. Suchak. You just search Suchak. This is my cousin. This is my account, which was from June to October. This is where you will find most trades. This has lots of mistakes. This is where I started sharing live from. Then there is this, which is currently live. And this is my wife's account, which is done in like April or somewhere May or I don't know, somewhere June. I use this. There are three other accounts. One of them can't be put here because it has name mismatch from Sensible and the actual Zerodha account. That I have put everything on X. Yeah, in the pinned post. There is one more PNL of my Marwadi account which was done in April and it just has a Excel sheet which shows the profit. There is nothing else I can show from Marwadi, so I just and the account is also closed now. So I have never shared it. I don't even have that sheet right now, Excel sheet profit wali, but I would have shown. So that's it. There is some profits in that also, but we forget it. We'll see it when paying income tax maybe. Bro, oh, wrong screen. Bro, what is the next support and resistance? For what I feel is, let's see tomorrow. There is nothing we can see right now because it's a clear downtrend. Now, for me, as of now, if it is, where is that thing? Okay, type. How do you draw? Whatever. Okay. So if it is going like, if it is gapping up and then falling down, downtrend continues. If it goes up, downtrend continues still here, like I guess, because it can go like this and that. So as we can see, downtrend is there only till here, downtrend. But we'll exit here because of course.
It is clear now. You can't have a stop loss like that. That you wait for the last high or something. You can switch here. This is the as such median point of the consolidation. If it is going above here from here, then I guess it should be good to go for calls. And what is this magic wand that I do here? Okay, bye. Good evening. I'm leaving. See you tomorrow. I am also leaving, bro. Let's go. I don't know, man, because it depends. In my personal accounts, family accounts, we have other incomes also. Then we legally, whatever we can reduce, we reduce the taxes. That's it, man. It is not only trading income, so I can calculate it. How you feel when you own book profit of 18 lakh? It is same thing, man. It is okay, I guess. Like, obviously, I want to book it, but if it goes away, market reverses, I cannot book it. It was not made for me. Next trend, we'll catch it again. It is about the process and not a single trade which attracts me. It is about following the process which attracts me. What's your point on option trading regulations in India? Will India may discontinue it in future? No, no, I don't think it can because it is a hedging instrument. If you are long on investments, so you should have something to hedge when the market falls. They can't stop short selling or buying options derivatives. Maybe they cannot. Should I start with 25,000 capital or 100,000 for one lot or two lot? I don't know. That depends on your strategy. You need to calculate the drawdown of your strategy. For my strategy, if I was doing it, I would be using 50,000 for 25 quantity, I guess. Then I would not have to infuse more money. You are booking up to 6 crore a month, isn't it? No, bro. I'm at 60 right now for this FI only, and maybe 1 CR is the target for the year. Let's see. I like even if it goes to 50 or 40, that is good returns, 100% returns. 30, like above 30 is 100% plus returns, and whatever we get further is good to go. Godmother, yo, what happened, Manas? Okay, yes, I also think that, but Twitter people get me worry every time. Yeah, man, nothing. So see, the basically the posts on Twitter are to get the engagement. So there will be a small news will be made bigger just to get those engagement points. निफ्टी गैप अप फिल कर रहा है क्या? गैप तो फिल गैप अप हाँ वो तो फिल हो गया. दैट इज डन एंड डस्टेड. वाह. I told you, I think my last message was that don't increase quantity in options buying. Take care. You, in options buying, your accuracy is going to be less. That is, you cannot do anything about it. If your accuracy is high, you are taking lots of trades and small SLs, or maybe if you are keeping a big SL, then you are going to get wiped out. So, in options buying, you have to go slow, very slow. And what was I saying? Yeah, when you have numerous loss-making trades, like you are losing fourth, fifth time. Hmm. Yes, हमने बात की थी. Yes, Manas, I remember. That's what I'm saying. And so, yeah, after you are having loss-making trades, generally that's where I try my best to increase the quantity because I know a trend is going to come because I know the pattern of my PNL now. Yeah, Dharmesh bhai. Chirag bhai, you being an option buyer, once you do profit, then do you withdraw profit or how do you manage it? Otherwise, if your account size can't increase quantity, also will increase. So yeah, I withdraw completely. I withdraw. I only keep the amount which is needed to buy options, and then I keep 10 lakhs for buffer when I have to change the sides. For example, calls cost more than puts in what I buy. So I keep extra money right now to buy the calls if there is a sudden up move here. So yeah, that's it. But I withdraw, yes, profits I keep withdrawing. Then I know I have to add it back whenever there are losses. देखते हैं 5 लॉट से करूंगा थोड़े हफ्ते में. Yo YOLO it. Do 10-15 lots एकदम loss cover in one shot, you know. Don't do that, bro. Go go for 1 lakh.
crore, and then we will compete with James Speed. Yeah, bro. Institution versus institution. Let's be an institution. Let's finish them. Trend following. Hold ही कर लेंगे. कितना pump करेंगे वो? Your view on pyramiding like addict lots once in profits. Ah, yes, that's what I'm trying right now. I'm working on it कि अभी नीचे गया है उसके बाद भी am I strong enough to add more quantity? मतलब मन नहीं कर रहा है अभी ऊपर से ही करना था ऐसा हो रहा है. But I want to do it. I want to try that because I maybe reduce the losses. I will reduce my losses with it. Yeah, so by same quantity size always. Yes, that is what I prefer. Ki same quantity size. Quantity size is very important because once you make a profit in one lot and you might lose even half a move in two, half the loss in two lots will just ruin it. So simple calculation. Don't increase quantity randomly. You are just like the system that you have back tested will get ruined because you increased quantity. The results that you got with your backtest won't be available to you when you increase quantity. If I March calls this trend is bullish, is it okay? I don't know, man. We Nobody knows if it is going to go up or down. I think you should have a plan. If you are buying March calls, what will you do if it goes up? What will you do if it goes down? What will you do if it goes sideways? I think you should work on that plan and it would be all good. एवरेज प्राइस बहुत इंक्रीज हो रहा है एंड लॉस जल्दी स्टार्ट हो रहा है पिरामिडिंग से. यस यस ऑफ कोर्स बट बिकॉज जैसे ही अपनी साइड ट्रेंड आएगा विल इंक्रीज एंड देन इफ इट वन रिवर्सल एंड इट्स ऑल बूम. Bro, how you see the future of F&O? Like it can be banned or not accessible to trade for retailers like us doing it now? Yeah, it will be accessible. I don't think they would. I think there are other issues like betting apps and all which needs to be looked at first. Then this, I think they have a problem with us maybe because are they getting less income tax? Are we not earning enough? We should start taking money from institutions. So maybe we'll earn something, pay income tax, and the finance of the country will be happy, and we'll be happy too. Okay, now I think I should stop. All right, too much for today. See you all. Had fun. Now we'll figure out how to close this. How do you? Chalo, thanks everybody. Thanks for coming, and see you later. I'll put up a video of the last video's comments. I'll put up a video today evening if I get free. Let's do it. Chalo, bye bye. Love you all. Thank you.